Let's see. A triumph for surgery. Triumph means victory. And here surgery means hospital. Okay. So the story is taking round of a doctor, a pet dog, and an owner. Okay. There is an owner called here Mrs. Pumphrey. Pet dog Tricky. Tricky is the name of a dog, and writer of this story is a vet doctor, veterinary doctor. So the overview of this story is taking round of these three characters: owner, Mrs. Pumphrey, a pet dog named Tricky, and the writer is a vet doctor. Vet means veterinary doctor. Who is called veterinary doctor? A doctor who look after the matter regarding the disease or taking care of all the animals are called veterinary doctor. Clear? Same as usual, a normal doctor who take care of all human beings, they are called normal doctor and human doctor, that we see. But the doctor, those who look after all the matters, all the deficiency, all the disease, they deal only the animals. They are called veterinary doctor. Veterinary science, जैसे इसमें आता है veterinary science के जो डॉक्टर होते हैं. Now we just take a glance on this story. Mrs. Pumphrey is a rich lady. Mrs. Pumphrey is a rich lady, landlord type of lady. You know, she had plenty of money, luxurious things. She had a good, even villa. She had more than 20-25 servants. They used to look after all the things of her villa, as well as the only one pet dog. She treat the dog as a son. So that's why she loved a lot. She took care and she gave everything whatever the dog desires. The same here, but the writer is that means the veterinary doctor is a family doctor of Mrs. Pumphrey. He used to go to the villa and look after the disease, look after the nutritious things, and take care whether the dog is taking exercise or not, means all the necessary advices that could be given by only doctor to Mrs. Pumphrey. There was a gardener. There was a gardener of Mrs. Pumphrey, and his duty was to look after the garden as well as to involve into the exercises of Tricky. Clear? If we write a particular name for either any animal, generally pet dog is a common noun. Pet dog is a what? Common noun. So we should not use he or she for the common noun. But if it has name, it change into proper noun. The dog will be converted into proper noun. Why? Because we have changed the name. We have given some specific name for this animal. So अगर किसी भी जानवर को हम अगर नाम से पुकारते हैं तो वो कॉमन नाउन नहीं रह जाता है. वो किस नाम में चला जाता है? प्रॉपर नाउन में चला. तो प्रॉपर नाउन के साथ हम ही और शी का यूज कर सकते हैं. ठीक है? सो सेम थिंग इज हैपनिंग. अब एक दिन होता क्या है, राइटर वॉज
driving his car. That means the doctor was driving his car, going into the street. Suddenly, in his view, he found, who found? Doctor. Doctor found that Mrs. Pumphrey was on walk. Mrs. Pumphrey was on walk. She was walking with her pet dog Tricky. Doctor saw the condition of the Tricky as before. He had already treated the dog. He had given some medicine. He had given some advice. So when doctor saw the condition of Tricky, the doctor felt himself that the condition of the Tricky is not good, because his body was converted into like a blotted sauces. You know what is the meaning of blot? Blot means phula hua, swollen, and sauces like balloon like a structure. What kind of a structure? Balloon like a structure. It was looking like the flat from top to bottom. The whole part was swollen. His eyes were red shot. That means he was not good from the inner side. So that's why the blood was completely looking into the eyes of the dog. Doctor knew that something is wrong. So he asked a question to Mrs. Pumphrey. Are you giving proper exercise to Tricky or not? As you know, when doctor advises us, we listen the advice of doctor when we are in problem. This is the human tendency. This is not only the tendency or the character of Mrs. Pumphrey. It happens with everyone. Whenever we feel that I am not good, and when you consult a doctor, doctor advises something to do this, not to do that. We only follow till we are not getting क्योर. मानते हो इस बात को? जब थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं, अब लगता है कि मैं बीमार हो गया हूं, तो डॉक्टर के हर एडवाइस को मानना शुरू कर देते हैं. लेकिन जैसे जैसे क्योर होने लगते हैं, धीरे धीरे वो सारे एडवाइस साइड होने लगते हैं. फिर से वो सारी एक्टिविटीज जो हमने रोक दी थी, उन सबको धीरे धीरे फिर से एग्जीक्यूट, फिर से थोड़े से प्लान में आ जाने लगते हैं. एंड एज ए रिजल्ट जब डॉक्टर की मुलाकात आपसे फिर होती है, तो डॉक्टर कहते हैं क्या आप वो सारी चीजें रोक रखे हैं जो मैंने मना किया था? मैंने आपको कहा था कि यू शुड नॉट ईट स्वीट्स, यू शुड नॉट ईट आइसक्रीम, यू शुड नॉट ईट डैश फलाना एवरीथिंग. बट you have a good example, you have a good answer. Sir, actually I did. Same. Mrs. Pumphrey also told that yes, I cut his sweets, ice cream, other thing also, whatever you suggested. But as you know, my Tricky is so fond of ice cream. Look the thing. Who does not want that I should eat a lot of sweets? Who does not want that I should eat whatever I wish? हर कोई चाहता है. कौन नहीं चाहता है कि हमें अपने मन पसंदीदा खाना मिल जाए? कौन चाहता है कि हम जाकर के पसीने में एक्सरसाइजेस करते रहें, अब गर्मी में टहलते रहें? कोई नहीं चाहता है. सब लोग चाहते हैं कि लग्जरियस लाइफ आराम से रेस्ट करते रहें. सब लोग चाहते हैं. इवन यू टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ योर स्टडीज, तो तुम्हारे भी मन में होगा कि आई शुड गेट गुड मार्क्स वेदर आई स्टडी और नॉट. प्लीज गिव मी सम विश. माई विश could be accomplished, whether it should be accomplished or it should be finished. If it is fulfilled, you say it is finished. If it is not fulfilled and it is stopped, it is called accomplished. देखिए ये दोनों की बात समझने लायक. accomplished वर्ड कब यूज करते हैं? जब हमें लगता है कि मैंने किया ना किया ये तो खत्म हो गया. एक टाइम आएगा आपकी पढ़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी, क्लासेस ओवर हो जाएगी, चाहे आप पढ़ें या ना पढ़ें. तो डॉक्टर ने जब प्रिस्क्राइब किया कि देखिए मैम आपको अपने ट्रिकी के लिए इन चीज़ों को नहीं खिलाना था, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल एकदम नहीं खिलाएंगे. बट वेरी सून सी हैड अ वेरी गुड प्ली. एक बहाना नहीं निकल गया. क्या कि ट्रिकी लाइक्स और ट्रिकी फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, क्रीम. So I cannot deny,
when I found that he was looking listless. किसको बोलते हैं listless? Lack of enthusiasm. Listless means lack of enthusiasm, lack of inner happiness. You are simply sitting and feeling bored, no energy, no any kind of thought is rising in your mind. Obviously we say that it is a loss of appetite. Loss of appetite, loss of enthusiasm, and your energy is not reflecting on your face. Your activity is looking like a very dull. So that Tricky was converted into dull. He was looking lethargic, that you can say letho. So if the lethargic person, that means you are telling that go there and कोई बात नहीं, I'm comfortable here. Even if you know that that particular chair is comfortable and you are sitting lying on the rug, rug means कालीन होता है. You are lying on the rug and somebody is telling go and sit comfortably. You are thinking that इतना दूर उठ के जाएंगे तब ना comfort zone में जाने. And here okay. This is called lethargy. You are hungry. You are willing to drink a glass of water, but you don't have that water. You have to go at that running tap or maybe at the hand pump to get to fetch a glass of water. So you are thinking कौन जाएगा वहाँ जाके एक गिलास पानी पिएगा. चलो कोई बात नहीं, आधे घंटे के बाद पी लेंगे, एक घंटे के बाद पी लेंगे, या किसी और से मांग लेते. That's a good idea. If I should not carry water bottle, I should borrow. So this is also an example of lethargic people. Those who are idleness, they are having idle, alasya. That's why it's a very famous proverb we have heard in Sanskrit. Alasya manushyanam sarirasto maripu. सुने? तो ये इडलनेस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है. यानी आलस्य ही इंसान के, मनुष्य के जो भी इंसान होते हैं उनके शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है आलस्य और नेग्लिजेंस. अब आलस्य के साथ साथ यानी इडलनेस के साथ साथ हमारे अंदर अगर नेग्लिजेंस भी आ गया तो सोने पे सुहागा हो गया, तो स्टार बन गया. अभी तक तो प्लस चल रहे थे, अब उसके साथ साथ नेग्लिजेंस भी आ गया. और नेग्लिजेंस जब आता है अपने साथ साथ एरोगेंस को भी ले आता है. देख लो जितने सारे ये जेंट्स आ रहे हैं, ये क्या क्या तुम्हें स्टार पे स्टार देते जा रहे हैं. एक तो नेग्लिजेंस था, मतलब लापरवाह बन जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा चलो मेरा यूनिफॉर्म गंदा है, मम्मी यूनिफॉर्म वहाँ रखी है, सिर्फ मुझे कबर्ड से निकालना था, प्रॉपर शूज़ को पहनना था, लेकिन क्या मैं तो रोज उसको पहन रहा था ना, जल्दी जल्दी में वही पहना स्कूल आ गया. दैट वॉज माई नेग्लिजेंस एंड आई थॉट अरे अब तो मुझे जवाब देना पड़ेगा. आई रोट एन एप्लीकेशन. इवन आई कॉपीड द सिग्नेचर ऑफ माई पेरेंट्स. प्लीज आज, बिकॉज इट वॉज माई नेग्लिजेंस. आई डिड नॉट यूज माई प्रॉपर टाइम. I could not wake up early. I could not arrange my books. I could not complete my homework. These all are plea. ये सारी चीज़ें जो है वो plea हैं, और इन चीज़ों को पहले सिर्फ हम बहाना ही बनाते हैं और nothing else. जब बहाना बनते बनते बहाना इतना बड़ा हो जाता है तो लोग कहते हैं कि this is the perfect example of negligence. That somebody told me that you should not do this. I thought, yes, I will follow from tomorrow, not from today. If it is bad activity, I promise to them that okay, आज छोड़ दो, कल से पक्का. Early morning, right at 4:30 a.m., I will be there. But अब ये 4:30 में नींद भी खुल गई, but you are thinking, अच्छा कल से, tomorrow onwards. ये कौन बोल रहा है? योर नेग्लिजेंस सिस्टम. इडलनेस थोड़ा आगे बढ़ा क्योंकि उस समय तुम्हारी नींद तो खुली. योर पॉजिटिव, योर बॉडी इज टेलिंग टू यू कम ऑन, यू हैड प्रॉमिस्ड यस्टरडे, सो कम ऑन गेट अप. लेकिन अब नेग्लिजेंस कह रहा है कि कोई बात नहीं है, आराम से.
अब उस आराम से हमारा टाइम धीरे धीरे बहुत फास्ट बढ़ गया आगे, एंड एनी हाउ वी मैनेज। तो अब मिसेस पॉम्फ्रे भी इसी टाइप की लेडी है। तो एज बिकॉज सी, ये एक फेमस प्रोवर्ब है, राइटिंग में भी आता है कि एक्सेस केयर ऑफ आवर ओन बिलवेड थिंग्स मेक अस डल। अब क्या है कि एक्सेस लव इज डेंजरस, एक्सेस फॉन्ड फॉर एवरीथिंग, for anything is dangerous. If you are willing that I want everything, you do not segregate the things that this much thing is only required. तो तुम्हारे डायलॉग में, हमारे डायलॉग में जब ये आने लगे कि I want everything, तो समझना कि फिर एवरीथिंग में तो सब कुछ आने लगेगा, नेगेटिव पॉजिटिव सब आने लगेगा, और योर हार्ट विल नॉट बी एबल टू सेग्रीगेट. यू हैव टू सेग्रीगेट बिफोर टेकिंग दैट. एक बार मिक्सअप होकर के आएगा तो हाउ विल यू जस्ट सेग्रीगेट. सो बिफोर गेटिंग यू नीड टू सेग्रीगेट. अब मुझे कौन बैड हैबिट था, तो मिसेस पम्फ्रे कुड नॉट सेग्रीगेट दैट द हैबिट दैट ट्रिकी वाज विलिंग टू गेट आई शुड नॉट गिव हिम. Because according to the advice of the doctor, I should have to follow all the diet. But the Tricky was turned in lethargic. His eyes was, bloodshot, and his harness means some part of the legs were touching the ground. The muscles of the legs were touching the ground. Even he was unable to walk properly. He was tottering. T-O-T-T-E-R. Tottering. Tottering is the character of a baby. 1.5 year baby who is tottering. देखिए बच्चों को चल नहीं पाते तो घुटने पे चलते हैं. Sometimes they fall. तो वो अपने आप को घसीटते हुए भी चलते रहते हैं. So if they are dragging their body and going ahead, they are also tottering. They are putting their legs one step this side, one step that side. There is no calculated direction to go. That is also called tottering. So same as usual, the path was not being just taken by the pet dog, Tricky, and he was tottering. He was tottering and Mrs. Pumfrey was somehow busy in some work. So the doctor stopped there and asked this question, that Tricky was not looking good. He saw that animal and he thought that very soon she would call me, the doctor, please do something. Doctor went from there because the condition of the Tricky was not good. Same thing happened after some time. A call came and Mrs. Pumfrey was wailing. Wailing, W-A-I-L-I-N-G. Wailing means, wailing means crying. मैंने तुमसे कहा था weep, W-E-E-P. Sad. The first one is sad. Second one is weeping. Other one is crying. Third one is wailing. And finally sobbing. Sobbing. ये हो गया प्राइमरी लेवल से लेकर के और PhD तक. Sobbing. ठीक है. एंड फाइनली सॉबिंग से फेंटिंग में कन्वर्ट लोग होने लगते हैं, बट वो तो दिखावा होता है. फेंटिंग एंड सॉबिंग इज नॉट प्रिटेंशन, बट द फेंटिंग इज समथिंग डिफरेंट. इफ रियली द हार्ट इज एकिंग एंड यू फील समथिंग बैड, इट हैपेंस दैट वी लूज आवर कॉन्साइंस. दैट इज कॉल्ड फेंट. बेहोशी कब होती है? व्हेन वी लूज आवर कॉन्साइंस. ओके, गॉट इट? So my gardener who looked after my dog, it has gone to his village. वो अपने गांव चला गया है. That's why in these days ring, the catching ring practice, that in that the dogs are involved. When you are throwing a disc and the dog is jumping and catching the disc, you might have seen such practices. So these all are actually the part of the training in which the animals are actually involved. So same thing, she told that actually these things are not going well. My dog is not running in these days because my gardener is out of a station. He has gone somewhere in his village. So वो तो अपना बहाना बना दी
एंड आप क्या कर रही हैं? नो, आई एम जस्ट टेकिंग ऑन हिज वॉक, मैं तो उसे सिर्फ टहला ही रही हूँ। अब कुछ दिनों के बाद ये प्रॉब्लम जब आया तो सी स्टार्टेड क्राइंग, सी स्टार्टेड वेलिंग दैट द थिंग्स गॉट वर्स्ट। अब जब चीजें वर्स्ट हो गई